हेलो स्टूडेंट्स, इस टाइप्स ऑफ वेरिएबल सीरीज की हम सेकंड वीडियो में स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बात करेंगे. सो लेट बी स्टार्ट. सो व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैटिक वेरिएबल फर्स्ट? सो द वेरिएबल value vary objects is called static variable. It means for every class there is one copy only for every static variable. स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है भाई? स्टैटिक वेरिएबल वो है जिसकी ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हमारी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं हो रही है ना. और हर वेरिएबल की एक ही कॉपी बन रही है हमारी क्लास के लिए, है ना. अब इन अ सिमिलर वे ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल हम पर इसको एक्सेस कर सकते हैं और कहाँ पर इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ये दोनों ही केसेस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन उसके पहले हम एक बार एक सिंपल इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल को मैं किस तरीके से कर सकता हूँ. तो सपोज आई एम क्रिएटिंग वन क्लास हियर एग्जांपल. In this example class I am using the x is equal to 10, and I am simply defining one constructor here, define underscore underscore init underscore underscore self, and just I'm writing self dot void is equal to suppose 20. When I run this code and create e is equal to example, when I print e dot x, you can see the output is 10. And so this is nothing, it's a class label और स्टैटिक वेरिएबल. देखिए, स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए मैंने किसी भी तरीके का सेल्फ का यूज नहीं किया हुआ है उसको, है ना. सो लेट वी सी व्हाट आर द वेरियस प्लेसेस टू डिक्लेयर द स्टैटिक वेरिएबल. अब देखिए, यदि मुझे स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, सो इनसाइड क्लास वी कैन डू दिस, बट आउटसाइड ऑल द मेथड्स. यदि मुझे ये डिक्लेरेशन करना है स्टैटिक वेरिएबल का, तो मैं इनसाइड क्लास तो करूंगा लेकिन सारी मेथड्स के बाहर करूंगा, है ना. एंड सपोज आई वांट टू डिक्लेयर इट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर. हाउ टू डू दिस? To do this, we will be using the class name to declare it. You can have the declaration of this inside instance method also, but by using the class name. You can declare it inside the class method by using self or by using the CLS variable or class name. Another place inside the static method using class name. So you have seen here some new words like what is the class method, what is the static method. So about these methods we will discuss in detail in the types of method series. So in this particular case, what you can see here in whole activities, the common thing is that you can declare your static variable inside, whether it's a static method, whether it is a class method या फिर ये इंस्टेंस मेथड हो आपकी, आप कहीं पर भी किसी भी मेथड के अंदर इसको डिक्लेयर कर सकते हैं. लेकिन किसके थ्रू डिक्लेयर कर पाएंगे आप? बाय यूजिंग द क्लास नेम ओनली.
है ना? तो हम एक डेमोन्स्ट्रेशन में देखते हैं कि किस तरीके से हम स्टैटिक वेरिएबल को हमारे डिक्लेयर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना? सो लेट वी सी, हम एक एग्जांपल क्लास बनाते हैं फिर से। Inside this example, first I do, suppose a is equal to 10, I am having one variable. Now I'm defining one more variable underscore underscore init underscore underscore. I'm using self here. If I'm using self, it means कि वो क्या है आपका इंस्टेंस वेरिएबल। लेकिन यदि मैं सेल्फ यूज ना करके क्लास नेम का यूज कर रहा हूँ, सपोज एग्जाम्पल डॉट बी इज इक्वल टू 30, suppose 20 here. Similarly, I am defining one class, one method m. It is nothing because it is containing self only. So this method is nothing. It's a instance method. And again, I am taking this code from here. एंड इसके अंदर मैं मेथड सी वेरिएबल को इनिशियलाइज करा रहा हूँ। सपोज मैंने इसका वैल्यू जो है 30 दी हुई है मेरी। आई एम हैविंग वन मोर मेथड दैट इज डिफाइन m1. This m1 method is containing the CLS and it's a kind of variable है ना। जिस तरीके से हमने सेल्फ वेरिएबल पे काम करा है वैसे ही ये CLS वेरिएबल है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे क्लास मेथड्स के टाइम पर। हम इसके लिए मेथड को क्लास मेथड बनाने के लिए वी हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी। इस तरीके से हमने डेकोरेटर का यूज करा था, यू हैव सीन इन द प्रीवियस क्लासेस डेकोरेटर। सो कैन यू कैन सी हियर द एप्लीकेशन ऑफ डेकोरेटर्स। सो एट द रेट क्लास मेथड है हमारी, उसको हम क्लास मेथड डिक्लेयर करेंगे। पाइथन वर्चुअल मशीन्स को क्लास मेथड समझेगा इस एट द रेट क्लास मेथड के कारण। और इसके अंदर भी हम दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज d1 इज इक्वल टू 40 एंड सपोज CLS, सपोज हियर आई एम राइटिंग एग्जाम्पल डॉट d2 इज इक्वल टू 4000। क्लास मेथड के अंदर भी हमने देखा। फाइनली आई एम टेकिंग m2 और इस मेथड को मैं कौन सी मेथड बनाता हूँ एज पर द डिस्कशन। सपोज आई एम क्रिएटिंग एज अ स्टैटिक मेथड। इस स्टैटिक मेथड के अंदर कुछ भी हमें पास नहीं करना है, दैट वी विल डिस्कस व्हाई वी डोंट वांट टू पास एनीथिंग। ये हम मेथड्स के टाइम पर डिस्कस करेंगे। बट देखिए इसके अंदर भी हम हमारी क्लास जो है एग्जाम्पल, इस क्लास के थ्रू हम एक और वेरिएबल बनाएंगे ई, और इसकी वैल्यू हम सपोज इनिशियलाइज करते हैं 50 से। Now, now you can see this. We are having not any kind of error. अब जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर चुके हैं वर्किंग परफेक्टली, यदि मैं स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ किसी क्लास में मेरे कितने स्टैटिक वेरिएबल बने और क्लास लेवल बने हुए हैं, तो सी हियर वेरी केयरफुली। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके क्लास को ही यूज करूंगा इसको एक्सेस करने के लिए। और जो डिक्शनरी हमने डिफाइन करी थी, तो हमें यदि एग्जाम्पल क्लास जो है हमारी, इस क्लास पर यदि हम वी वांट टू वर्क ओवर अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। So when you run this code, can you see यहाँ पर आपको सारी चीजें डिक्शनरी में दिखाई दे रही हैं, और इस प्लेस पर आपको स्टैटिक वेरिएबल अपना जो है वो दिखाई दे रहा है a इज इक्वल टू 10। व्हाट इज द थिंग टू ऑब्जर्व हियर, हमने अभी तक इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया एग्जाम्पल क्लास का। सो a is 10 is only available here because the which is declared outside द ऑल द मेथड। सो जब भी इस क्लास के लिए जो मेमोरी लोकेशन है, इसकी स्टैटिक वेरिएबल को ऑलरेडी मेमोरी मिल चुकी है, जो कि काइंड ऑफ ग्लोबल मेमोरी है, जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के टाइम पर सेम ही वेरिएबल रहने वाला है। अब यदि इसका नेक्स्ट मैं इफ आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, इफ आई एम सिंपली क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ई and run this code here, so can you see this, uh, the e dot underscore dict underscore dict here, I have to take it like this.
example dot underscore dict. So here can you see the output? So after this object creation, you are having two variables, a is equal to 10 as b is equal to 20. जब हमने हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल किया, मतलब बाय डिफॉल्ट पाइथन वर्चुअल मशीन ने कंस्ट्रक्टर कॉल किया जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए, है ना? Let I call these methods like e dot suppose m. When I run this code again here, can you see another variable that is c is equal to 30? So by calling these methods, similarly मैं यदि m1 को कॉल करता हूँ और m2 को और कॉल करता हूँ, here is m1, here is m2. When I run this code, can you see all the variables are available here? So this variable is created by the CLS and this variable is created by the example. तो CLS वेरिएबल के थ्रू भी हमारा जो है डेटा बनने वाला है, वो कम्प्लीटली क्या बनने वाला है, स्टैटिक ही बनने वाला है। आप सभी लोगों ने एक चीज पर अभी ध्यान दिया होगा कि जब इस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा है, यदि मैं इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से डिक्शनरी को प्रिंट कर रहा हूँ, है ना, आई विल टेक इट इन द अदर सेल, तो मैं ई डॉट प्रिंट ई डॉट अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर रन दिस कोड। कैन यू सी द एम्प्टी डिक्शनरी है? क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस के साथ कॉल कर रहा हूँ, सो इट इज सर्चिंग द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेमोरी। अब जो क्लास लेवल पर वेरिएबल्स आए हैं ग्लोबल, उनको सर्च नहीं कर रहा है, ये किसको सर्च कर रहा है? खुद की मेमोरी में इट इज सर्चिंग फॉर द वेरिएबल। अब जब इसके ऑब्जेक्ट की मेमोरी में, खुद की मेमोरी में जब वो वेरिएबल्स को सर्च करेगा डिक्ट, सो इट विल सर्च फॉर इंस्टेंस वेरिएबल रेदर देन स्टैटिक वेरिएबल। सो दैट इज व्हाट द रीजन कि हम ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, अभी हमने देखा कि हम स्टैटिक वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं ना। नाउ वी चेक दैट व्हाट आर द प्लेसेस टू एक्सेस, हाउ टू एक्सेस static variable. So how to access the static variable, है ना? So just like a instance variable, what are the places where we can access? So we can access inside constructor. Inside constructor, how we can access it? By using class name, or you can access it by using the self also. But we should remember that by using the class name, inside instance method, remember the constructor is also the instance method. Using class name or self, inside class method, class name. Similarly, inside static method, using class name. And last one is from outside the class, using object reference and class name. So let me see the things practically. Here I am having one class, that is, suppose the class name is example again. I am defining the a is equal to 10 and I am taking the constructor here. Now I want to access this a, that is a static variable. So what I will do, print self dot a. This will be working as per our concept. Print, I will write the example dot a.
Now I'm defining another method, that is our instance method m, right, m1 self colon. Let I take the same code here. Now for another one, just a minute, it should be the particular indent should be right and its indent should be correct. That is the indent. Okay. Now suppose I am taking this one again and changing the name of method, that is m2. This is a basically a class method. Here we will be changing the self instead of self. The self is also correct name, but to differentiate the instance and class method, we use the CLS variable here. So here we will be writing the CLS only. Now we are having another method here, that is m2 static method. So, these are the methods and by these methods we could be able to access. अब मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर देखिए आप सेल्फ का हम यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज स्टैटिक मेथड है और यहाँ पर कोई आर्गुमेंट भी हम पास नहीं करेंगे. सिंपली हम इसको कॉल करते हैं और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. सो कैन यू सी ऑल द प्लेसेस द कोड इज एग्जीक्यूटेड परफेक्टली. सपोज आई राइट ई इज इक्वल टू एग्जाम्पल हेयर. एग्जाम्पल क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया and when I execute this code, so you can example is not defined. So where is the example? Okay, it should be example here. It should be, and finally it should be the example only. When I run this code, which line there the example? Where is the example? Everywhere self example. Print statement. So can you see, uh, by using this example, we are having 210 only because the constructor is initialized here. Let I do e dot m1 now. So when I call e dot m1 method, can you see the output is 10? Two tens are there. Again, when I call e dot m2, again we are having the two tens here. Now finally we call we call m1, then we call m2, and this is what the m3. And so you can see for the e dot m3, we are having all the outputs of a variable. So these are the various places where we can access. The last one is here, by using the class name or by using the object reference, I want to access a. So when I run this code, can you see we are not having any kind of error? So we can access the class variable also inside outside the class by using the object reference. So these are the multiple places. Now one more important thing here. We have created static variable. We have accessed the static variable. One more important thing is there. What are the places where can modify the static variable? Okay. So we can modify inside or outside the class. हम इसको वेरी कर सकते हैं. But important thing is that by using class name only. What does it mean? लेकिन इसमें एक पॉइंट और है इम्पोर्टेंट.
कि हम क्लास नेम पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम यदि क्लास मेथड है, वी आर हैविंग द क्लास मेथड, तो वी कैन डू बाय यूजिंग CLS वेरिएबल। अब देखिए इसका मतलब क्या है। Suppose I am having this class. Here I am taking the same example of the code, and let I remove this one. A is equal to 10 लिया है यहाँ पर. Now yeah, I am defining one class method at the rate class method, and M1 and passing the CLS. Then I do the CLS dot A is equal to Rahul, and finally I call one method that is a define M2. I'm giving it the static method. I'm calling here the example dot E is equal to Vasu. So this is the actually this is basically static method. So when I run this code, well, static method should be together. Name error here A is equal to this class method. It should be class meth. Okay, now it's fine. अब यदि मैं सबसे पहले नंबर प्रिंट करता हूँ, लेट आई प्रिंट example dot a and this code. So can you see the output is 10? I'm taking same code but with the different situation. Here I'm calling e dot, I'm creating an object of this e dot example that I call e dot m1. Print the code here, print example. So can you see the output is Rahul? It means this static variable has been modified by this M1 class method by using the CLS variable. And the same can be done by using a class name also. Now when I call the same code here, and let I take M2 method here instead of M1. Let I take M2 method here. When I run this code, can you see the output as a Vasu? So these are the various places where we can modify the static variable. Let we have one more scenario. What happen if we use object reference self to modify the static variable? The static variable, if you're using the object reference and self, then what is happening? So suppose I'm having this code here. Here I'm taking dot e is equal to by reference. हमने इसको रेफरेंस वेरिएबल से चेंज करने की कोशिश की है, एंड वी आर ट्राइंग टू change this a variable which is here defined here. Now when I run this code again and print the example dot a, what is the output? The output is the Rahul, because uh,
because we have done the multiple modifications here, है ना? और जब हमने m1 मेथड को कॉल किया है, let I remove this method also, then we check for this. Now see this, and this code and control X and control. So can you see this? The output is 10 only. हमने ई डॉट ए को रेफरेंस के थ्रू चेंज करा, लेकिन जो हमारी वैल्यू स्टैटिक वेरिएबल की है वो चेंज नहीं हुई. देन व्हाट इज हैपनिंग, ये वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ एरर, और वी आर एबल टू रन दिस कोड प्रॉपर्ली बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट रेफरेंस. सो कैन यू सी दिस? प्रिंट ई डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर. Similarly, you are having print example dot underscore underscore dict underscore. So now can you see this? Here a is equal to y reference, and here you are finding the a is equal to 10 only. इसका मतलब है जब भी हम चेंज करने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू, है ना? लेट मी सी द थिंग्स ग्राफिकली. देखिए, जब भी ये एग्जाम्पल क्लास बनी हुई थी, तो हमने जैसे ही एग्जाम्पल क्लास को यूज करने की कोशिश करी, वी हैव डिफाइंड दिस. हियर a is equal to 10 ऑलरेडी क्रिएटेड. व्हेनेवर वी वर यूजिंग दीज मेथड्स, तो यदि मैं बात करूं आपके एग्जाम्पल क्लास की, ये डायरेक्टली आपकी इस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रही है. इफ आई टॉक अबाउट द CLS वेरिएबल, इट इज रेफरिंग टू दिस मेमोरी लोकेशन. Again we are having example, so whenever we are changing this with the help of example and CLS, it is changing the same value. So firstly we were example 10 for this, then we have the value of the Rahul, then finally we had the value of Vasu by third method here. But what is happening when you're creating the object for this example, one more memory location which is pointed by the e is there. Then when you write the e dot a, initially there was nothing, then e is written here, and finally Rahul is written there. Sorry, by reference is written there. So now this E is referring to this memory location, but the example and CLSs are referring to this memory location. So these are taking this value as the output. That is what the reason. For this dictionary, we are getting A is equal to 10. And for this dict code, and this particularly called with the object, we are getting this A is equal to by reference value. तो जब भी हम सेल्फ के थ्रू या हम किसी भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू स्टैटिक वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ इल्यूजन दैट वी आर चेंजिंग द स्टैटिक वेरिएबल, बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, उस रेफरेंस के थ्रू एक नया इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के मेमोरी एरिया में. So this is what the difference when we modify by using the object reference and when we modify by using the class name. Static variable. That's all from my side. Thank you.